ओबे कजो Hello dear students, Assalamu alaikum. Here is Naveed Ahmed Sehto. Welcome to our YEWS YouTube channel. Here we are going to launch this new YouTube channel with the name of YEWS YouTube channel. So it's just a trial lecture today I am going to deliver. It's just a try. So here today's our topic is Introduction to English Literature. The students of all classes must know what is English literature, what about literature, English, and what are the functions of literature, what are the branches of literature. Generally, the definition of literature here I would like to explain. Literature is the mirror of life. It is the mirror of life, means it reflects all the things from life are related to life. What the things we found in this world are related to literature. Even human beings, animals, birds, natural things, living, non-living things are related to literature. So here, first of all, here the word English, where from it takes place, where from it comes into being. You know, English is the language of national language of Britain, the Great Britain. English is the national language of Great Britain, so it comes from Britain. It's the national language of England, we can say. Where from it comes, here is I am going to explain in briefly the history of English literature. So there were two tribes living there. Those were known as Germanic tribes, Anglo and Saxon. They attacked England in the earliest history of the world, even 450 AD, about 450 AD, Anglo and Saxons. Number one, Anglo means Angles. Number two, Saxons. These were two Germanic tribes. These were two Germanic tribes who were talking two languages. Angles were talking Anglo and Saxons means Saxon same. So from these two tribes the language came into being named Anglo-Saxons. Anglo-Saxons in the history of English literature, first of all in England, Angles and Saxons attacked England and they settled in England. That is why the people of England started speaking language which is known as Anglo-Saxon language. What is known as Anglo-Saxon? Here is Anglo-Saxon is the name of language of English language. It is the earliest part of the history. It was speaking in English. In England, most of the people were speaking. So these Anglo-Saxon language, there were writers, two famous writers in English literature, Geoffrey Chaucer and Gower. Number one, Geoffrey Chaucer. Number two, Gower. These two were poets as well as dramatists, Geoffrey Chaucer and Gower. These are the famous writers of this era, Anglo-Saxon, which the part of language in the earliest history, I must remind you. Baba, he पहिरियों जेको अटैक थियो हुयो इंग्लैंड में, एंगल्स ऐं सेक्सन्स ॿ कबीला हुया जर्मनी जा, उन्हनि इंग्लैंड ते अटैक कयो ऐं उन्हनि खां पोइ आस्ते आस्ते ये कबीला यानी these were the tribes and the people started talking their language on impact of Anglo-Saxons. The language came into being. हाणे जॾहिं हिननि अटैक कया त इहा ॿोली असांखे वजूद में अची वई जंहिंजो नालो हुयो एंग्लो-सैक्सन ॿोली. हीअ जेका लैंग्वेज आहे इहा स्टार्ट कॾहिं थी इंग्लैंड में 450 AD. It started from 450 up to 1150 AD. So this is the first language started, or we can say evolution of English language.
is known as Anglo-Saxon. पहिरियों जेका एवोल्यूशन थी आहे उहा एंग्लो सैक्सन जे नाले सां अंग्रेज़ी जी थी आहे. अंग्रेज़ी जे बारे में मां ॻाल्हायां तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड लिटरेचर एज वेल एज. सो एंग्लो-सैक्सन्स जा जेके बेस्ट राइटर्स हुआ जोफ्री चासर एंड गोवर. जोफ्री चासर्स द फेमस बुक is Prologue to Canterbury Tales. Prologue to Canterbury Tales. This is a famous book of poetry written by Geoffrey Chaucer in Anglo-Saxon language. ही मां किताब एंग्लो-सैक्सन लैंग्वेज में लिखियल आहे. अंग्रेज़ी खां पहिरियों हिकिड़ी लैंग्वेज थी वई एंग्लो-सैक्सन्स. उन जो राइटर जोफ्री चासर उन हिकिड़ो किताब लिखियो आहे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स. प्रोलॉग जो मतिलबु आहे इंट्रोडक्शन, यानी कैंटरबरी टेल्स जो इंट्रोडक्शन. इहो जेको फेमस बुक आहे इहो अॼु ॾींहं ताईं हर यूनिवर्सिटी में पढ़ायो वेंदो आहे जेको जोफ्री चासर लिखियो आहे. छा में लिखियल आहे? एंग्लो-सैक्सन में. इन खां पोइ असांजी आफ्टर एंग्लो-सैक्सन मिडिल इंग्लिश केम इनटू बीइंग इनटू इंग्लैंड. It was introduced Middle English, means the language from different tribes, different areas brought into new shape, and it took the form of just like Middle English. So the most of the people were talking Middle English in England. That started from 1150 up to 14th century. Up to 14th century 1150 खां 14वीं सदी ताईं मिडिल इंग्लिश हुई. उन खां पोइ असांजी स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टार्ट थी आहे नंबर 3. दिस इज़ द मिडिल इंग्लिश एरा. ही मिडिल इंग्लिश जो दौर आहे इंग्लैंड में. इन खां पोइ नंबर 3 आहे स्टैंडर्ड इंग्लिश. स्टैंडर्ड इंग्लिश जेका असांजी स्टार्ट थी इंग्लैंड में उनखे असां एलिज़ाबेथन एरा वी कैन आल्सो से. Elizabethan era or Elizabethan English. Why we say? Because in that era it started in the 15th century. पहिरियों त असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे त स्टैंडर्ड इंग्लिश 15वीं सदीअ में शुरू थी ऐं उहा एलिज़ाबेथन एज उन वक़्त में क्वीन एलिज़ाबेथ हुई इंग्लैंड में रूलिंग पई करे. ऐं शेक्सपियर जो दौर हुयो 15वीं-16वीं सदी. यू नो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड ही डाइड इन 1616. 1564 में शेक्सपियर इंग्लैंड में पैदा थियो, 1616 में वफ़ात करियो. दैट इज़ द पीरियड इन विच स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश केम इन टू बीइंग. इन दौर में असांजी मॉडर्न इंग्लिश ऐं स्टैंडर्ड इंग्लिश अची वई. स्लोली ग्रेजुअली इंग्लिश started to be evaluated, and in this format we have standard English today. अॼु असांजे किताबनि में स्टैंडर्ड इंग्लिश आहे जंहिंखे मॉडर्न इंग्लिश बि चयो वेंदो आहे. ऐं इन इंग्लिश जी स्टार्टिंग जेका एंग्लो-सैक्सन खां थी, जेके जर्मनी जा कबीला हुया. उन खां पोइ मिडिल इंग्लिश अची वई. उन खां पोइ असांजी एलिज़ाबेथन एरा अची वई ऐं स्टैंडर्ड इंग्लिश अची वई. इहो असांजो हिकिड़ो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो. दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर. व्हाट अबाउट इंग्लिश लिटरेचर? यू कैन फाइंड in English literature there are 3 sections. We can say English literature is divided into 3 sections or 3 branches. Number 1 here is drama. Number 2 poetry, and number 3 novels. Drama, poetry, novels or prose, we can say prose, poetry, drama. These are the branches of English literature, we can say. Now this is the introduction of English literature. You know there are so many poets of England, poets, dramatists, novelists who worked in different their periods of time. उन्हनि जेको आहे मुख़्तलिफ़ लिटरेचर जे बारे में जेके बि आहिनि असांजा, जीअं विलियम शेक्सपियर आहे, जॉन कीट्स आहे, दीज आर नोन एज रोमांटिक पोएट्स. विलियम वर्ड्सवर्थ, this is known, he is known as poet of nature. So Charles Lamb is the essayist, and Montaigne is also one of the American famous essayists. So there are so many essayists in English literature and poets in English literature and novelists Robert Browning and Robert Browning and we can say there are so many novelists as well. Novelists भी तमाम ज़्यादा आहिनि. जीअं जेको आहे सो ऑस्कर वाइल्ड आहे. ऑस्कर वाइल्ड भी हिकिड़ो इंग्लैंड जो फेमस नॉवलिस्ट आहे, ड्रामाटिस्ट आहे. सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर राइटर्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर. एंड इंग्लिश वर्ड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग.
वेयर फ्रॉम इट कम्स इन टू बींग। इंग्लिश वर्ड आयो किथां आहे वजूद में, कहिड़ी ॿोली जो वर्ड आहे, ही हिकिड़ो इंट्रस्टिंग सुवालु आहे। त अंग्रेज़ी जेको असां पढ़ंदा आहियूं त अंग्रेज़ी जेको लफ़्ज़ आहे इंग्लिश, इहो वजूद में किथां आयो आहे, इहो असां सभिनी खे मालूम हुजणु घुरिजे। त जीअं मां तव्हांखे शुरू में चयुमि स्टार्टिंग में, त आई टॉक्ड अबाउट एंगल्स एंड सेक्शंस। दीज वर टू जर्मनिक ट्राइब्स, मीन्स these tribes belong to Germany. So there is a great impact of Germany upon England and English as well. So Germany जो ही हिकिड़ो वर्ड आहे लैंग्वेज जो पुराणो, जेको सभई यादि रखंदो, ट्यूटानिक, TUTONIC। ट्यूटानिक वर्ड लैंग्वेज मां इंग्लिश वर्ड वजूद में आयो आहे। द इंग्लिश वर्ड हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम ट्यूटानिक लैंग्वेज and it is the language of Germany and it is a ancient language। इहा हिकिड़ी क़दीम लैंग्वेज आहे जर्मनी जी, जेका ट्यूटानिक, उन मां असांजो इंग्लिश जो वर्ड मुतारिफ़ थियल आहे ऐं वजूद में आयो आहे। After that, here is another topic we want to learn, bare infinitives in English grammar. What are the bare infinitives? Here I am going to introduce briefly. Suppose there are some words to whom we can use bare infinitives: let, bid, should, would rather, had better, must, etc. or etc. So these are the few words to whom we can use bare infinitives in a sentence. What are bare infinitives? As first form of verb without to, having the meaning of infinitive, are known as bare infinitive. बाबा bare infinitive उनखे चइबो आहे पहिरियों फर्स्ट फॉर्म हुजे, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म हुजे, जंहिंखे असां प्रेज़ेंट टेंस चवंदा आहियूं, ऐं उहो विदाउट टू हुजे, टू खां सवाइ हुजे, पर मीनिंग जेका आहे उहा मस्दर वारी ॾे, मीनिंग जेका आहे उहा असांखे bare infinitive वारी ॾे, उनखे चइबो आहे। सपोज लेट आहे, here is example, let me take tea. So this is the verb bare infinitive. This is bare infinitive. Why it is bare infinitive? Because if I write here in this way, let me to take tea, it will be incorrect. Because with late there is no need to write a to with the first form of verb. Without to is known as bare infinitive. Number 2 example, bid, bid him go away from here. Here is also bare infinitive. What is bare infinitive? Go is bare infinitive here. बाबा हिन जी मीनिंग आहे मस्दर वारी मीनिंग ॾींदो। ॾिसो, लेट मी टेक टी, मूंखे चांहि पीअणु ॾे, पीअणु मस्दर अची वियो। बिड हिम गो अवे फ्रॉम हेयर, हुनखे हितां परे वञण लाइ चओ। वञणु जेको वर्ड आहे गो आहे, विदाउट टू मीनिंग थो ॾे वञण जी, मस्दर जी, त इहो बेयर इन्फिनेटिव थी वियो। बिड छा आहे? बिड माना से आहे। बिड वर्ब आहे फर्स्ट फॉर्म, हिन जो सेकेंड फॉर्म BADE आहे, ऐं थर्ड फॉर्म बिडिन आहे, BIDDEN, and sometimes bed same भी थींदो आहे। So this word we use in other format as well. असां ॿियनि तरीक़नि सां बि असां bid खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। Suppose ही ॾिसो, he bade me tearful farewell. हिन मूंखे गमगीन, टीयरफुल माना गमगीन, रोंदे हिन मूंखे अलविदा कयो, हिन मूंखे रोंदे अलविदा चयो। ही bade me tearful farewell। हिते जेको बेड आहे इहो मेन वर्ब यूज़ थियो आहे। हिते असांजो बिड जेको आहे इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ थियो आहे, जीअं लेट असांजो इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में इस्तेमालु कयोसीं। हाणे असां चवंदा लेट थी वियो, बिड बि थी वियो, शुड ऐं मस्ट, इवन शुड ऐं मस्ट बि असां इन्फिनेटिव में यूज़ कंदा आहियूं, बेयर इन्फिनेटिव में। I should take exercise। हिन जी मीनिंग ॾिसिजो बाबा, टेक हिते बेयर इन्फिनेटिव आहे, मूंखे वर्जिश करणु घुरिजे, करणु जेको वर्ड आहे उहो मस्दर आहे। मीन्स टू टेक,
but if we write down to take, the sentence will be incorrect, because should is used with a bare infinitive and take is here bare infinitive. Number 4, would rather. I would rather die than beg. Here beg is also used and begging is also used in ing form. Here is die bare infinitive, beg is a bare infinitive. What will be the meaning of this sentence into Sindhi? मां पिनण खां मरण पसंद कंदुमि. मां पहिरियों वर्ड पिनण आहे, बेग माना टू बेग, मीनिंग पिनण मसदर वारी पर विदाउट टू. मरण पसंद कंदुमि, मरण में भी टू डाई हुजणु घुरिजे हा पर सिर्फ़ु डाई आहे. छो जो वी आर टॉकिंग अबाउट बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू इन्फिनेटिव. ही अहिड़े क़िस्म जा मसदर आहिनि जिन में टू रखण जी ज़रूरत ई न हूंदी आहे. टू रखंदासीं रांग थी वेंदो. हेड बेटर. नंबर 5, हेड बेटर स्ट्रक्चर आहे. यू हेड बेटर स्पीक ट्रुथ. तव्हां जे लाइ सच ॻाल्हाइणु बहितर आहे. ही स्ट्रक्चर आहे. हिन खे पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस न सम्झंदो. हेड बेटर सां गॾु फर्स्ट फॉर्म पवंदो जेको बेयर इन्फिनेटिव हूंदो आहे. यू हेड बेटर स्पीक ट्रुथ. तव्हां जे लाइ बहितर थींदो सच ॻाल्हाइणु. हिकिड़ी इहा मीनिंग निकिरंदी आहे फ्यूचर टेंस में, ॿी प्रेज़ेंट टेंस में निकिरंदी आहे. तव्हां जे लाइ बहितर आहे सच ॻाल्हाइणु. हेड बेटर. आफ्टर दैट मस्ट. वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स. असांखे पंहिंजे वालदेन खे ज़रूरु फर्मा बरदारी करणु घुरिजे. असांखे पंहिंजे वालदेन जी ज़रूरु फर्मा बरदारी करणु घुरिजे. हाणे ही छा आहे? वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स. वर्ड जेको ओबे आहे इहो असांजो हिते बेयर इन्फिनेटिव थी वियो. एंड देयर आर सो मेनी यूसेजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव वी कैन यूज़ इन इंग्लिश, लाइक लेट, बिड, शुड, would rather, had better, must, need. Need is also here. Is I am going to write down. You need. Take shower. तव्हांखे वेंझण जी ज़रूरत आहे. यू नीड टेक शावर. टेक शावर जेको वर्ड आहे नाउन आहे ऐं हुनखे असां टेक में इस्तेमालु कयोसीं. हिते बेयर इन्फिनेटिव थी वियो. यू नीड टेक शावर. So here these are the examples of bare infinitives, means without to. Bare, what is the meaning of bare? Without to means empty. Empty we can say खाली बगैर to जे. ये असांजा हिकिड़ा स्ट्रक्चर्स हुया जेके असांखे यादि करणा पवंदा. And this was the introduction of English literature. That where from English language started. English language started from two tribes, Angles and Saxons. They came and they attacked England in the 450 up to the 1150. And Anglo-Saxons, they also there were two famous writers of that era, Geoffrey Chaucer and Gower. What the prologue to Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer wrote a book, famous poetry book. And after that, Middle English started from 1150 up to 14th century. There are in some books it is also written 1050. And after that, Standard English, it started from the 15th century. या 15वीं सदी खां शुरू थी आहे स्टैंडर्ड इंग्लिश ऐं हुनखे मॉडर्न इंग्लिश चऊं था, जेका अॼु ॾींहं ताईं असांजी मौजूदु आहे. ऐं असां अॼुकल्ह मॉडर्न इंग्लिश वी टॉक एंड राइट एंड स्पीक, राइट even and hear, listen. So this was the brief introduction related to English literature as well as English language. English word, once again we must remember that it comes from the Teutonic language and it is a Germanic language. It comes from that language. So it is enough for today, and it is just like a trial class for the YEWS channel. We are going to introduce this channel, and all of you once again welcome to